Okay, thank you so much. So Tuftung AI is a platform where you can have any tough conversations. Okay, let's say it is your project presentation tomorrow that you have to give it to your professor, or let's say it is your interview prep, summer internship prep, or final interview prep. You can have all of the interviews practice at Tuftung AI. Okay, we have created this platform so that the others can uh, create very nuanced scenarios very easy. So I'll just head over to the tool that we have created. So let's say uh, if someone from your university or your college has an interview in Google, okay, let's say we try to create a mock interview very quickly. Okay, Google software engineering interview. Let's say mock interview for now. Okay, and that's it. That's the only thing that you have to write. Okay, everything will be automated. So what I'll do is I'll also try to give you a glimpse of the master scenario, that how we can create it. Okay, let's say create a mock interview for Google software engineering role, and that's it. The AI will do its magic and create the complete scenario. It will add all of the nuances, the role plays, and everything. It will take some time, but the idea is that many students currently don't get to actually practice before their interviews, and the current market situation is not very good. So you have to practice a lot before going for that interview. And many of the students are actually introverted. They don't want the feedback from their colleagues or from the friends that you have. Okay, so that's the reason this is the perfect platform that you can try. By the way, it is completely free to try, so you don't have to pay anything. We'll wait for another couple of seconds. Yeah, and that's it. I'll apply the scenario and then head over to this. So everything is added over here. And then we also have something like, let's say, if you want to replicate some of the YouTube videos that you follow or your best YouTubers, you can just add the YouTube video over here, and then it will try to replicate that interview. We also have a lot of features over here. You just have to go and try it out. For now, I'll just add one tool, okay, which is the image generation inside the mock interview itself. And then I'll also have one image. So let's say it is the interviewer image. We'll try to generate some image. Um, Hopefully, yeah. So it is generated, and that's it. I'll start the scenario. Just a second. Yeah. So I'm not a software engineer. I won't be able to crack this interview, but let's start. Hello. Hi, I'm Name. Hello. Hello. Yes, Hello. Rahul Umre. I'm I'll be interviewing for Google Software Engineer, and this would be for Software Engineer 2 with the work ex of more than 4+ years. Hi, Rahul. I'm Name, a software engineer at Google. I've been here for a few years working on the search team. Today we'll spend about 40 minutes on a coding problem and then finish with a few behavioral questions. Do you have any questions before we start? Nothing as of now. Let's. Great. For the Okay. coding problem Before, today, before I'd you, like you to solve the following. sorry, before you start, can you quickly create an image of Google and their CEO?
I am sorry, but I cannot generate images of specific people, Okay. So including the CEO. currently it is not able to generate in this mock interview since mock interview doesn't have it. Okay, but we are able to do it. Then let's say in your case, you guys must be having your coding interviews as well, right? So we have that interface as well. I'll just quickly go through it. So let's say I'll go through Medium. Okay, let's say this question. The idea behind this is that whenever you are having a software engineering interview, you'll also be asked, like you'll have to code something. The interviewer will give you the question and then you'll have to code it on the basis of some logic. So this is the interface that we have created. Hello and welcome. Today we'll be discussing a coding problem related to linked lists. Sure, let's start. Great. First, I'll explain the interface for the coding interview. You'll I know have the two interface. tabs. Can we just jump onto the question right away? All right, I understand. I will now reveal the problem statement. Please let me. So as you see on the left hand side, now we have the question. So after starting the interview, we'll get the question in general, right? So that is the idea behind that, that whenever you start your interview, you get the question, then you have your solution. So you'll talk it out with the interviewer. You'll get this, you'll have your solution written it over here. We have three languages, that is the most common languages, and then we'll run the test. Okay. Now, what after you do everything, you have to get the feedback, right? So I'll show you how you guys get the feedback as well. Let me check through my session history. Okay, let's try this one. So you'll get the detailed feedback as well. uh, So from the next action items, what you have done well, where you need to improve, and what exactly do you need to do. And we also have the chat option. So let's say if you think that you are not able to understand the exact thing that you need to improve on, you can have a chat with the agent as well. Okay. And then lastly, we have the coach mode. So if you see over here, we have the coach mode as well. So what coach mode actually does is it will try to remember you. So just like how a typical coach would be, right? In the first session, it will try to understand you. What are your challenges? How do you excel in few other things? How where you are lacking in terms of some competency. Okay, so it will try to analyze, and then from the next session onwards, it will give you detailed personalized session. It will remember your name. So let's say my name is Rahul. It will say, "Hello Rahul, thank you for the last session. Let's start afresh, or let's start from where we have ended from the last one." Okay, something like that. So it remembers you from each subsequent session. Okay, and I think that is it from my end. If you guys have any questions, uh, I would love to take few of them. I think I got like 10 to 15 minutes of video, so that's the reason I was just quickly going through it. Guys, any question? Does anybody have any questions? Did you guys understand? First of all, like I can repeat it in a simple way if you guys want it. No question. That means I think Hello. you want. Go ahead, Ayush. Sir, this is totally free or any premium features are available or what? So I think you guys will be getting some credits from the team itself, as well as will provide some credits as well. Okay. So it is not completely free, but it is free to try. So you can have your one or two interviews with Tuftung AI, and then we can think of the pricing
whenever you guys want to like uh, take the subscription or something like that. So this is mostly for interview. Let's say you have an interview tomorrow, you won't be taking a subscription, right? You just want to practice tomorrow and that's it. So that is when you'll only take the minutes. So you can take buy the minutes or you can buy the subscription. So there are two ways to it. And I think, I hope I have answered your question, Ayush. Yes, okay, thank you. Okay. And Akash says that I should repeat. Okay. So Tough Tongue AI is a platform where you can have any tough conversation. By any, I means any conversation. Okay, let's say I'm in Bangalore currently. Okay, now if I want to do some rent negotiation or some hike negotiation with my manager, okay, I'll practice it with Tough Tongue AI. I'll say create a manager role play, and I'll practice it before the real deal. Similarly, you guys will be going for your interview for your project presentations. I think this is November, so most likely you'll be having some presentation in the November itself. So before going to the professor directly presenting to them, head over to Tuftung AI, give your presentation to Tuft. By the way, Tuftung AI is also merged with Google Slides. So if you are creating some slides on Google, just add that link on the Tuftung AI and that's it. You don't have to present it. The Google slide, like Tuftung AI, will automatically read all of the presentation and then move your slides. You just have to say, go to the second slide, go to the third slide. That's it. I hope I am able to answer your question, guys. So this can like give any type of interview or like HR rounds or only coding, everything is present. So any type of question, but coding as well. So coding is an USP, but any type of question. Let's say if you have your first round as a general HR question, general CV resume based question, right? So you just have to upload the resume. That's it. And then the AI will understand your resume and then ask you the questions on the behalf of that. So this can be done for all type of degrees, not only BTech, but All type of degrees. It's generic for everyone. Any tough conversation. Okay. So let's say if you have your first round as your HR, second round as your case study. Okay, you just have to give the case to the AI. The AI will act as an let's say manager or VP, and then ask the questions on behalf of that. And then the let's say third round or fourth round would be general HR question, HR based question, right? So that can also be done. And then it will also teach you, not exactly act as a manager or interviewer, but it will also teach you. So there's an option named coach, right? You can actually create your own coach. Say that, okay, I'm not very good in terms of interview, you can also teach me. Okay. I think my time is up. It's 15 minutes already. Thank you so much. I would definitely love to collaborate again and would love to have some sessions on, let's say, Gen AI or anything apart from that. Okay, thank you, Mr. Umare. We also really like the product. I'm sure the audience also really. sure. Thank you so much. Try it and get interview ready, guys. Thank you. Bye bye. Okay, since so many of you have already joined, I extend a warm welcome to ElevateX, which is an all-in-one mentoring initiative by IEEE. And whether you're aiming for a career in a research industry or exploring competitive coding or electronics, or even looking to strengthen your soft skills, we've got tracks designed for you. And tonight, we'll be focusing on the most important step, a step which is prior to what you all had seen just now. It's about shaping your career. It's about building a resume that not only gets noticed, but also helps in it also leaves a lasting impression on your recruiters. And we, IEEE JUSB,
I was delighted to welcome our speaker for the evening, Mr. Shayandeep Shorkar, who is a software engineer at ICICI Bank and a proud member of our CPC JU25 batch. So, with his first time experience in navigating the competitive world of placements, and he's here to share practical insights and tips to help you stand out. So, without further ado, let's all give a warm round of applause to our speaker for today's session. And let's start. So, I guess Shandeep guys here. Over to Yeah, you. am I audible? Yes, you're Audible audible. and visible both, right? Yes, yes. Yeah. Okay. So hi everyone. I'm Shayandeep. I have graduated from Jadipur University in the Department of Mechanical Engineering last year, and currently I'm doing software engineering at ICICI Bank, Mumbai. I was the central placement coordinator last year for the 2025 batch. So, see, I don't want to make the session boring. Rather, what I will do, I'm giving you some chances. Like, you can ask me anything regarding the placements or resume, anything. Dada, I had a question that you know, get if I have not done an internship like in placement, uh, the CV basically it's a whole, right? So like how to fill up that to make myself more presentable to the people who are going through it. See, like, if you haven't done any internship, then you are getting more time, like, for preparation for the placement, right? Hmm. So what you can do, you can like look for any type of startups or small companies or IITs or NITs or any other research institutes. Like I myself had internship from Indian Institute of Management Shillong. So you can go for that and get some experiences. That will definitely help you in the placement. And as as you were CPS, you must have seen many people get on campus or off campus placements. So you think there was any difference in the resume or anything which helped this? No, like if I'm fresher, then there is not as such any difference. But mostly the differences are for the experienced people. Thank you. You guys can ask me questions. Dada, as the CPC, what were some general resume mistakes that you saw all throughout? Also, let's do one thing. I have some resumes of some of my batchmates. Like, can I share my screen? Yes, yes, definitely. Yeah. Okay, just wait. I'm giving you some examples. Okay, just wait a second. Yeah. So, is it visible? Yes. Yes, it's visible. Just wait. Okay, so this is CV of one of my friend Shubhodeep. Okay, he was from Instrumentation and Electronics Engineering, 2025 batch. Like he is currently in ZS Associates Bangalore. So see, there are certain sections that should be in your resume. So first one is your basic introduction, like phone number, email ID, LinkedIn ID, and your name, your location, and then experience section. Or if you don't have any experience, you can add like internship, or directly you can go to your projects like this. Okay, so your resume must be of one page. Like since you are in your third year, second year, or first year, do you have students from fourth year here?
Anyone from fourth year? Anyways, chalega. So you have to add some projects like at max 2 or 3 projects. Like this is the first project, this is the second project. Now there are some important like things which we need to understand. See, whenever you are mentioning any type of project, your heading must be very very clear. Like he has made study board based on knowledge graph. So knowledge graph is a technology, it's in machine learning. Anyways, so your heading must be very very clear. And after that you should always mention your project github link. Like this is the github link where he has pushed all the like codes of his project. This is mandatory. Like you have to mention your github link. The your heading must be very clear. And after that, the description. This is the description of the project, and he has made the text bold here. Cosine similarity charts, the important terms, okay, like DeepSeek R170B. And this is the second project. And after that, the skill section. So the skills section should be of 2 or 3 types, like technologies, skills, cloud services, and anything like tools. Like if you are from core background, then you can add uh, other softwares which we generally use in core industries as well. And after that, education, you can mention your education background uh, at the end of your resume, और पहले भी रख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है. और after that, the position of responsibility, like if you have any such a position of responsibility, like uh, if you are a member of any club or any organization, you can definitely mention that. So these are the main fundamental parts of like which your resume should have. And yeah, you shouldn't use your own picture on your resume. That's very very important. Like जब मैं placement में था last year, तो तब देखता था बहुत लोग, like they used to mention, like they used to add their images, own images, face on their resume. That's very very bad. Okay, so कुछ idea मिला होगा. Dada, we had a question that why putting the face is such a bad idea. You can use your college like college logo, but you shouldn't use your own face, because sometimes companies initially before the online assessment, companies resume shortlist करते हैं, तब वो लोग ATS use करते हैं. So if they are using ATS, then there's a high chance that like they won't select your resume if you are using your own image. Are there any specific keywords like to make your resume more? Nothing like that. Like you can mention anything, but that should be relevant to your projects and all experience. অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। বলছি ওই যে ইন্টার্নশিপ গুলো ওগুলো কি কলেজই হেল্প করবে না আমাকে অফ ক্যাম্পাসে ট্রাই করতে হবে? No, hello, am I audible? ইয়েস ইয়েস। नो, ये सब केसेस में ही तुम्हें हेल्प करेगा. मतलब ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, इंटर्नशिप, मतलब हमेशा ही हेल्प करेगा. ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब अलग अलग सिनेरियोस पे अलग अलग होता है. इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीथिंग. Actually, uh, I have a question like that. How college help to get the internship like IIM or IIT's research intern? I saw many people say intern in IITs or IIM, like my branch mechanical engineering. Actually, how the process works? You are from which year? I'm first year. Okay, so see, IIMs और IITs के internship का ऐसा होता है, like you have to do cold mailing, okay? Like you have to go through their websites and you have to collect their email IDs and then send your resumes and your like details and everything, and after that they will like select you. But college doesn't help you in that way to get any internship in IITs or IIMs. Your college provides the funding, but college as placement cell, they won't help. Dada, like
মেনি পিপল আমাদের এখানে অনেকে বোধহয় কর্পোরেট ইন্টার্ন না পেরে রিসার্চ ইন্টার্ন করে, বাট অ্যাকচুয়ালি কর্পোরেটে যেতে চাই, তো ওগুলো কি করে লাইক ম্যানেজ হয়? দেখ, কর্পোরেটে যেতে চায় বাট রিসার্চ ইন্টার্ন করে, এটাকে অনেক কোম্পানি মানে অনেকভাবে মানে এটাকে অবজার্ভ করে, ঠিক আছে? লাইক ওটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে তোর ইন্টারভিউয়ার কিরকম ভাবছে তার উপর। সি ইফ আই এম অ্যান ইন্টারভিউ, লাইক আই এম ইউর ইন্টারভিউয়ার, দেন I don't have any issue like whether you have done any corporate internship or any research internship. But कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जब जो इंटरव्यू लेने आता है वो लोग पूछते हैं तुम्हें कि तुम्हारा रिसर्च इंटर्नशिप था तो तुम कॉर्पोरेट पे क्यों आना चाहते हो, मतलब कॉर्पोरेट ही क्यों, तो कॉर्पोरेट पे इंटर्नशिप क्यों नहीं किए? जिसका जिसका मतलब बहुत एक सिंपल सा आंसर है कि तुम्हें मिला नहीं ऑन कैंपस, राइट? হুম। তো तो মানে এটার জায়গায় কি অ্যান্সার মানে দেয় লোকেরা? ওটা ডিপেন্ড করবে তোর ইন্টারভিউ এর মানে কি সিচুয়েশনে জিজ্ঞেস করছে তার উপর। যেমন একটা সিচুয়েশন এরকম হতে পারে যে তোকে যদি জিজ্ঞেস করে যে কেন কর্পোরেটে আসতে চাইছো রিসার্চ ইন্টার্নশিপ করে, তুমি রিসার্চের দিকে যাও, হায়ার স্টাডিজ করো, তো তখন তুই এভাবে ব্যাপারটাকে ফ্রেম করতে পারিস, লাইক ইটস অল অ্যাবাউট স্টোরি টেলিং। ওকে, তো এভাবে ফ্রেম করতে পারিস যে আমি ফার্স্টে রিসার্চটা মানে রিসার্চ ফিল্ড কিরকম হয় সেটা একটু এক্সপিরিয়েন্স করে নিলাম, যাতে রিসার্চে যা যেটার উপর কাজ করেছি সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি ফিউচারে যখন ফুল টাইমে জয়েন করবো কর্পোরেটে ইউজ করতে পারি। আমি যদি কর্পোরেটে ইন্টার্ন করতাম, ইন দ্যাট কেস আমি ফুল টাইমেও কর্পোরেটে কাজ করতে গেলে আমি রিসার্চের এক্সপিরিয়েন্সটা পেতাম না। So I have collected the experience which I have like gained while working on the research project, and then like I can apply that in corporate. এরকম ফ্রেম করতে পারিস, like it always depends on the situation. আর মানে ইন্টারভিউর সময় কি মানে ইন্টার্নশিপ জিনিসটা যেহেতু সবাই পায় না, লাইক খুব বেশি পয়েন্টস দেয় এরকম কিছু হয় নাকি? মানে যারা ওই সময় বোধহয় ইন্টার্নশিপ করে তারা অনেক প্রজেক্টস বিল্ড করলো ওরকম টাইপের? দেখ, তুই যদি ফুল টাইমের ইন্টারভিউ দিস, ফুল টাইম ইন দ্য সেন্স ফোর্থ ইয়ারে, তো তখন তোর ইন্টার্নশিপের প্রজেক্ট মানে ইন্টার্নশিপ করলে অবভিয়াসলি ইটস ওয়ে বেটার দ্যান হ্যাভিং এ ভেরি গুড প্রজেক্ট। ওকে, বিকজ ইন্টার্নশিপ প্রোভাইডস এ ভেরি গুড প্রজেক্ট, তো সেটা অবভিয়াসলি অনেক বেটার তুই যদি ফুল টাইম ইন্টারভিউ দিস। বাট লাইক ইফ ইউ আর অ্যাপিয়ারিং ফর এনি ইন্টার্নশিপ ইন্টারভিউ, দেন দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাট অল। দ্য ইন্টার্নশিপ ইন্টারভিউ আর লাইক ফুল টাইম ইন্টারভিউতে কি ডিফারেন্স হয় মেইনলি? ডিফিকাল্টি, আর কিচ্ছু না। মানে যেহেতু একটা বছর কম বোধহয় আমরা পড়ি, তো মানে অনেক জিনিস বোধহয় তখনও জানা হয়নি। দ্য ডিফিকাল্টি। Someone has written, Dada, as a make guy, how did you manage to get into software field? See, you are in Jadavpur University, so you have ample opportunities here. তো মেকানিক্যাল থেকে সফটওয়্যারে যাওয়া বা কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে সফটওয়্যারে যাওয়া ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট। ইউ জাস্ট নিড টু লাইক ডু সাম কোডিংস। বেসিক্যালি যদি তোর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে যেতে হয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু ডু ডেটা স্ট্রাকচারস এন্ড অ্যালগরিদমস, সাথে প্রজেক্টস বানাতে হবে। আর মেকানিক্যাল ম্যানেজ করার ব্যাপারটা হচ্ছে তোর পুরোপুরি তোর ওপর, মানে তুই কি করে টাইম ইউটিলাইজ করছিস। লাইক আমি ক্লাসে খুব একটা প্রেজেন্ট থাকতাম না, তার উপর সিন্স আই ওয়াজ ইন দ্য প্লেসমেন্ট সেল, তো আমাকে প্লেসমেন্টে অ্যাক্টিভ থাকতে হতো, তো ক্লাসে খুব একটা অ্যাক্টিভ থাকতে পারতাম না, রাতে জেগে পরীক্ষার আগে একটু পড়ে নিতে হতো। তো সিজিপি ডিসেন্ট 7.5 প্লাস রাখলেই হয়ে যায়, মানে ওটুকু ম্যানেজ করতে হবে তোকে। Is AI and data science better than CS and IT jobs now? There is no such thing like AI and data science. You guys are freshers. You shouldn't differentiate like this, AI or data science or software development. You guys can open your mic and then ask me directly. দাদা তো মানে যেহেতু যাদবপুর মানে অনেকেই ওই ড্রিমটা দেখে যে 40-50, তো ওদের রেজিউমেতে বা আমাদের রেজিউমে বা ওরা করেছে এনিথিং লাইক ডিফারেন্ট বিটুইন দ্য ওয়ান্স হু গেট দ্যাট এন্ড দ্য ওয়ান্স হু গেট লাইক আ বিট লেসার? Yeah, there are some differences like their projects, their level of understanding in data structures and algorithms. They have done some competitive programming. They have done like they have solved so many questions in lead code or any other platform. They have done very good projects. It will be just different.
otherwise like their communication skills সেটা খুব important. Communication skill is very very important in the placement. You know everything but you can't like speak properly, then it will be very very difficult for you. আর লাইক যারা কোডিং কনসালটেন্সি মানে কনসালটেন্সির জন্য কি মানে নর্মালি বা অন্য কোনো স্পেসিফিক স্কিলস দিতে হয় বা শিখতে হয়? See, consultancy is for everyone. Like it absolutely doesn't matter in which domain you are in. Be it like if you are a core guy, if you are a software guy, if you have done machine learning, data science, analytics, everything. Like so consultancy is for everyone. Like they ask only from your resume. So whatever you have mentioned in your resume, they will definitely like they will only ask questions from that. বাট লাইক অ্যাকচুয়ালি ইন্টার্নশিপের সময় কি লাইক কনসালটেন্সি ইন্টার্নশিপ হায়ার হয় লাইক অতটা, নাকি এটা শুধু প্লেসমেন্টের Very সময় হয়? less. That is very less. Consultancy internship is very less. See, it's not only about JU. Like in all, every colleges, the scenarios are almost same. বলছি দাদা, গুড যে মানে আইটি সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো আছে ওগুলো কি মেকানিক্যাল স্টুডেন্টদের অ্যালাউ করে প্লেসমেন্টের সময়? মানে That depends. Some IT companies allow, but most of them they don't allow mechanical engineering students. That's the truth. তো মানে তোমার সাজেশন কি থাকবে যে মানে কোরের পাশাপাশি অ্যাজ এ মেকানিক্যাল স্টুডেন্ট? Balance করে চল. Balance করে চল. Like your CGPA must be above 7.5. I don't care whether you are applying for software companies or core companies or consulting companies. Your resume, your CGPA must be above 7.5 or at least 7. CGPAs matter. Hello, Dada. Am I audible? Yeah, you are audible. Oishik, right? Dada, yes, Dada. দাদা আমি আইটি ফার্স্ট ইয়ার, তো জেনারেলি থার্ড ইয়ারে শুনেছি ইন্টার্নশিপ গুলো সব স্টুডেন্টরা পায়। তো ওটাতে কি কলেজ হেল্প করে, মানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, কোথায় অ্যাপ্লাই করবো এক্সেট্রা? অন ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট তো অবভিয়াসলি কলেজ হেল্প করে। অফ ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট নিজের থেকে খুঁজে নিতে হয়। লাইক ইউর সিনিয়র্স মাইট হেল্প, ইউর কানেকশনস দ্যাট ইউ হ্যাভ মেড থ্রু আউট দ্য 3 years। না দাদা, ইন্টার্নশিপের কথা বলছিলাম। ইন্টার্নশিপের কথাই বলছি আমি। লাইক অন আচ্ছা, ক্যাম্পাসে কলেজে হেল্প করে, আর আদারওয়াইজ অনেকে থাকে যারা কানেকশনসের থ্রুতে বা সিনিয়র্সের থ্রুতে, দ্যাট কামস আন্ডার কানেকশনস। তো ওইভাবে যায় বা কোল্ড মেইলিং করে প্রফেসরদের অ্যাপ্রোচ করে। যদি রিসার্চ ইন্টার্নশিপ, ইউ আর গোয়িং ফর রিসার্চ ইন্টার্নশিপ, তাহলে প্রফেসরদের অ্যাপ্রোচ করে। এই তো। দাদা, নীলাংশু ভট্টাচার্য একটা প্রশ্ন করেছিল, ইজ ইট গুড টু হ্যাভ আ সামারি সেকশন এট দ্য স্টার্ট অফ ইউর রেজিউমে? Your audio is cracking. Can you please repeat Songlab? Songlab, right? Yes, Dada. Is it good to have a summary section at the start of your resume? এটা জিজ্ঞেস Yeah, করেছিল। definitely. But not like that. I am Shayan. For example, like I am Shayandeep. I am a mechanical engineering student. Not like that. It should be very very concise. আরেকজন জিজ্ঞেস করছে, if someone is from electrical, can they get internship in Facebook? That completely depends on your like on your profile, on your luck. Obviously luck matters a lot. फेसबुक को आना भी तो होगा ना कॉलेज में। इंडिया में तो शायद ऑफिस भी नहीं है फेसबुक का। You have to look for off campus opportunity if you are targeting Facebook. দাদা, আমার একটা কোশ্চেন ছিল কি, লাইক ইন্টার্নশিপে ডাজ দ্য কোম্পানি ম্যাটার আ লট? লাইক মানে এই কোম্পানির ইন্টার্ন কম্পেয়ার টু লাইক এটা মানে বোধহয় ডিসি কোম্পানির ইন্টার্ন, ওরকম কোনো ব্যাপার থাকে? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি তোর ইন্টার্নশিপ যদি ইফ ইউ হ্যাভ ডান ইন্টার্নশিপ ফ্রম মাইক্রোসফট এন্ড আই হ্যাভ ডান ইন্টার্নশিপ ফ্রম এ নর্মাল স্টার্টআপ, তো অবভিয়াসলি ফুল টাইমে দেখ। ফার্স্ট অফ অল তুই মাইক্রোসফটে ইন্টার্নশিপ করছিস আর আমি একটা অন্য কোনো ছোট স্টার্টআপে ইন্টার্নশিপ করছি, তো অবভিয়াসলি দুজনের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স ছিল বলেই এই ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট হয়েছে। তো তার একটা এফেক্ট ফুল টাইমে পড়ে ইন্টারভিউ এর সময়। প্লাস কোম্পানির নামটাও ম্যাটার করে। যখন তোর ইন্টারভিউয়ার দেখবে ইউ হ্যাভ ডান ইন্টার্নশিপ ফ্রম মাইক্রোসফট অ্যান্ড
The another guy has done internship from normal XYZ startup. Obviously difference তো হবেই একটা, বাট হ্যাঁ সেটাকে ওভারকাম করা যায়। তো একজন জিজ্ঞেস করেছে রিকোয়ারমেন্টস কি, মানে ইন্টার্নশিপ পাওয়ার বেসিক রিকোয়ারমেন্টস গুলো। Very good CGPA, not very good, a decent CGPA, 2 or 3 good projects, one very good project and 2 or 3 two normal level project. That's it. You are from JU, you don't have to think about anything else. আর মানে ডিফিকাল্টি অফ তোমার মানে অ্যাপটি কোডিং রাউন্ড, তারপর ইন্টারভিউ এর মানে এগুলোর ডিফিকাল্টি লেভেল কি করে, মানে কতদিন তুমি ধরো হার্ড গ্রাইন্ড করলে তো লাইক কতদিনে প্রিপেয়ার হয়ে যায় মোটামুটি একটা কনফিডেন্স লেভেলের মতো। See, you all are engineers, সবাই ওয়েবজি দিয়ে এসছে এখানে, বা যেই মেইনস ক্র্যাক করে অন্য কলেজের থেকেও কেউ যদি প্রেজেন্ট থাকে, তো সবাই কোনো না কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম পাস করে এখানে এসছে। সো অ্যাপটিতে বেশি টাইম লাগবে না, হার্ডলি 1 মাস ভালো মতো অ্যাপটি করতে। দেন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস পাজেলস, অনেক কোম্পানিজ এখন পাজেলস জিজ্ঞেস করছে। তো there is a very good website, I don't know, since you are from first year, you guys are from first year, do you guys know Geeks for Geeks, GFG? ইয়া, তো গিগস ফর গিগস এ একটা খুব সুন্দর সেকশন আছে 100 পাজেলস বলে, জিএফজি টপ 100 পাজেলস। ওগুলো আই উড সাজেস্ট ফার্স্ট ইয়ার থেকেই লিটারেলি মুখস্থ করা শুরু করে দে। মানে বুঝবি তো অবভিয়াসলি বুঝতেই হবে, বাট আই উড সাজেস্ট মুখস্থ করা শুরু করে দে পাজেলস গুলো, কারণ ওগুলো প্রচুর জিজ্ঞেস করে, মানে ভ্যালু সহ কোশ্চেন সহ সেম চলে আসে, কোশ্চেন তো সেম আসেই, মানে ভ্যালুও সেম চলে আসে অনেক সময় ইন্টারভিউতে। তা একজন কোয়েশ্চেন করেছে কি, what do you think you did that led you to get a job at ICICI Bank? Decent project, decent understanding of software concepts and decent like experience. তার মানে কোর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা আসে অনেক সময় তাদের যে মানে সিএসআইটির মেন সাবজেক্টস গুলো থাকে ওগুলো পড়াতে, বা যেহেতু ওটা ওদের মানে ডিরেক্ট কলেজ থেকে পড়ে না, যেমন ডিবিএমএস, এগুলো অসুবিধা হয়, তো ওগুলো কি করে ম্যানেজ করে লোকেরা? ওগুলো তোকে ইউটিউব থেকে পড়ে নিতে হবে, লাইক কিছু কিছু খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকস আছে। ইফ ইউ আর এমিং সফটওয়্যার কোম্পানিজ, ওকে, ডেটা স্ট্রাকচারস এন্ড অ্যালগরিদমস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক। তাছাড়া অপারেটিং সিস্টেম, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মানে ডিবিএমএস যাকে বলে, উপস মানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, তারপর কম্পিউটার নেটওয়ার্কস, এই কটা তো ইউটিউব থেকে বা অন্যান্য বিভিন্ন সাইট আছে, গিগস ফর গিগস বা ইন্টারভিউ ভিডিও, ওগুলো থেকে পড়ে নিতে হবে। বাট এগুলো ম্যান্ডেটারি, মানে পড়ে নিতে হবে, মানে এগুলোই জিজ্ঞেস করবে তোকে। তো একজন জিজ্ঞেস করেছে if like any best projects from best sources valuable for internship. Any best projects from best sources valuable for anything, your since you are applying for internship, anything will work. A decent project, I don't know from which department you are from, so how can I say, but anything, a decent project, like even like if you are copying any project from YouTube, just go through each and every line of code and like have an understanding of like everything what you have done, that will work. Dada, could you map your journey? That could be a really good example of how you got your job. Okay, fine. See, I have another question. How should I prepare myself for core job? How can I target PSU? See, core job के लिए I am not the suitable person, but हाँ core job में interview में क्या scene होता है that I can share. Basically, core if you are aiming core companies, then your CGPA should be very good. Okay, there are like lot of companies जो बस CGPA के बेसिस पे तुम्हें छाट देगा पहले ही, इंटरव्यू के पहले ही, ऑनलाइन असेसमेंट के भी पहले ही। तो
तो तुम्हें पहले सीजीपीए अच्छा रखना पड़ेगा, उसके बाद तुम जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हो, लाइक मोस्टली कोर गाइस डू इंटर्नशिप्स फ्रॉम आईआईटीज और एनआईटीज। कोर में इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी कम होता है, तो यू कैन गो फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग्स विच आर अनपेड, दैट विल ऑल्सो वर्क। তো আর যেই রেজিউমেতে যেই টপিকগুলো মেনশন করছিস কোরের, লাইক ইফ ইউ আর ফ্রম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তাহলে যা মেনশন করছিস, আমি মেকানিক্যালের এক্সাম্পল দিতে পারবো, সিন্স আই এম ফ্রম মেকানিক্যাল, লাইক থার্মোডাইনামিক, স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস, এগুলো মেনশন করছিস, এগুলো প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে থিওরিটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল সবকিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে। এই তো এইটুকুই। আর পিএসইউ এর জন্য আলাদা কিছু হয় না, প্রসিডিওরটা পুরোপুরি সেম পিএসইউ তেও, আর 5টা কোর কোম্পানির মতো। Drop year matter in placements? Nah. 1 year, absolutely not. But if you have 2 or 3 drop years, then you might have some issues in some of the companies. I don't want to like take the names of the companies, but yeah, कुछ companies में होता है issue. If you can like please share your journey or roadmap. Yeah, see, in the first year, like I was very confused. Like, what should I do? Should I go for core or coding or analytics? So मैंने पहले सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब पहले थोड़ा कोर पढ़ने लगा था, उसके बाद थोड़ा मतलब एनालिटिक्स में शिफ्ट किया, लाइक एसक्यूएल, एमएस एक्सेल, थोड़ा तो पहले से आता भी था तो उसमें शिफ्ट किया। देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू कोडिंग। तो कोडिंग में पहले डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना शुरू किया, तो दैट टुक अराउंड 6 to 7 months टू फिनिश ऑल द टॉपिक्स इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गिविंग कंटेस्ट्स इन कोड फोर्सेस, लीड कोड, तो कंसिस्टेंटली कॉन्टेस्ट देता रहता था। रोज रात 8 बजे, मतलब 8 बजे ही कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट होता था, तो रोज कॉलेज से आके 8 बजे कॉन्टेस्ट देना शुरू कर देता था। तो पहले खराब रैंक आता था, फिर धीरे धीरे अच्छा रैंक आने लगा, फिर बाद में थर्ड ईयर में जाके स्पेशलिस्ट बना। तो स्पेशलिस्ट बनने के बाद थोड़ा और भी कुछ टॉपिक्स है विच आई हैव मेंशन्ड प्रीवियसली, लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। सो वो सब भी पढ़ना पड़ा थर्ड ईयर पे आके। इंटर्नशिप में बहुत सारे कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ था, इंटरव्यू दिया। अब प्रॉब्लम है कि आई वाज फ्रॉम मैकेनिकल एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज थोड़ा बायस्ड रहता है सर्किटल डिपार्टमेंट्स के ऊपर, लाइक they generally don't prefer people from core background, like core students from mechanical, chemical. Exceptions obviously होता है, लेकिन that's the truth, like they generally don't prefer. तो सीजीपीए भी उतना अच्छा नहीं था, मतलब डिसेंट था, 7.5 ऐसा अराउंड कुछ था। तो कुछ कंपनीज का फाइनल राउंड पे गया, फिर सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद कोल्ड मेलिंग करना शुरू कर दिया, एज आई सेड अर्लियर। तो आई एम शिलोंग पे इंटर्नशिप मिला डेटा साइंस पे, तो डेटा साइंस पे वहाँ पे इंटर्नशिप किया। बेसिकली दैट वाज अ डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, वो जेप्टो के साथ कोलैबोरेशन चल रहा था आई एम शिलोंग में, तो उस टीम पे काम कर रहा था मैं। तो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना, और डीएसए, कोड फोर्सेस, मतलब वो सब तो था ही पहले से, प्रैक्टिस चलता रहता था। फिर ऑन कैंपस शुरू हुआ, तो आई बिकेम द सेंट्रल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तब आया प्रॉब्लम कि प्लेसमेंट संभालते संभालते खुद का प्रिपरेशन करने का कोई टाइम ही नहीं बचता था। लाइक सुबह 6 बजे 7 बजे कॉलेज जाओ, पूरा दिन प्लेसमेंट संभालो, फिर रात को 8 बजे 9 बजे, कभी कभी 11 12 बजे भी बच जाता था आने के लिए, तो उतना टाइम नहीं मिलता था। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक्सेंचर में शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर इनक्रेफ में शॉर्टलिस्ट हुआ। इनक्रेफ में फर्स्ट राउंड अच्छा दिया था, लेकिन मेरा प्रोफाइल एमएल पे था। अब ये कभी कभी मैटर कर जाता है कि कुछ कंपनीज, मोस्टली स्टार्टअप से होता है कि अगर like if they are working on something different and your profile is something different, then like, तुम वो कितने भी अच्छे इंटरव्यू दे दो, they won't select you for the next round. Okay, तो इनक्रेफ में पहले राउंड, सिंस आई वाज फ्रॉम लाइक एमएल बैकग्राउंड एंड दे वर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, तो शॉर्टलिस्ट नहीं आया। उसके बाद एक्सेंचर पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सीजीपीए मेरा 7.4 ईयर पे आते आते प्लेसमेंट का काम करते करते थोड़ा मतलब सीजीपीए का भी इशू हो गया था, 7.3 के अराउंड आ गया। तो एक्सेंचर पे फाइनल राउंड तक गया वहाँ पे। तो फाइनल राउंड तक जाने के बाद सिलेक्शन नहीं आया, लाइक वी वर 58 स्टूडेंट्स एंड दे सिलेक्टेड ओनली 8 स्टूडेंट्स आई गेस। तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर और भी कुछ कंपनीज था, ऑफ कैंपस में ही ढूंढता रहा, 1-2 कंपनीज पे इंटरव्यू भी दिया, बट ऑफ कैंपस में पता है लाइक मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एनी ऑफ कैंपस ऑफर इफ यू आर फ्रेशर। ओके, तो फाइनली आईसीआईसीआई आया, तो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गया था। तो उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर इंटरव्यू अच्छा ही गया था, तो वहाँ पे हो गया फिर।
मतलब basically I faced lot of problem like since I was from mechanical and my focus on was on software. ये तुम लोग भी फेस करने वाले हो. तो लाइक Dada, 4.1 ইন্টার্নশিপটা করে রাইট আর 4.2 এর না থেকে প্লেসমেন্ট স্টার্ট হয় না 3.2 তোর কমপ্লিট হবে যখন, তারপরে 2 মাসের ব্রেক থাকে, তখন তুই ইন্টার্নশিপে যাবি লাইক বিফোর 4th ইয়ার. তারপর 4.1 আবার কলেজে ব্যাক করবি যদি তোর 2 মাসের ইন্টার্নশিপ থাকে. যেহেতু অ্যালাউ করে না 6 মান্থসের ইন্টার্নশিপ, তো তুই 4.1 আবার কলেজে ব্যাক করবি, দেন তোর তখন থেকেই ফুল টাইমের কোম্পানি আসা শুরু হয়ে যাবে, মোস্টলি ফ্রম জুলাই এন্ড. Dada, for every company, did you have to change your CV according to every company's needs? So, how did you get a hold of every time you change your CV? See, I didn't change my CVs, okay, because like I was shortlisted in very few companies, Accenture, ICICI, Increp, तो सब सेम टाइप का भी कंपनी था, सेम टाइप का ही. तो इसीलिए मतलब चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा. बट या लाइक अगर ऐसा मतलब सिचुएशन अराइज करता है कि कंपनी, सपोज तुम पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू दे रहे हो विच इज ए कंसल्टिंग रोल, एंड उसके बाद ही तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट पे इंटरव्यू है विच इज प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल, तो तुम्हें रिज्यूमे चेंज करना ही होगा. बट मेरा केस पे वैसा था नहीं, इसलिए आई डिडंट चेंज माय रिज्यूमे. पर कोई टिप्स उसके बारे में अगर चेंज करने पड़े तो? Yeah, that totally depends on the company. Like if you are giving interview for any core company, then मतलब सारा सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट हटा दो वहां से, add all core projects there and then just change, make some changes. बस प्रोजेक्ट ही तो चेंज होगा और क्या ही चेंज होगा. इंटर्नशिप तो तुम दोनों जगह कर नहीं सकते, सॉफ्टवेयर का भी और कोर का भी. बस प्रोजेक्ट्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स ही लाइक यू कैन चेंज. Okay, Dada. And then someone is asking about the general procedure of placements. ओके, सो जुलाई से शुरू हो जाता है प्लेसमेंट्स, कंपनीज आना. सो पहले गुड कंपनीज ही आता है मोस्टली. तो पहले क्या होता है, ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उसके पहले गूगल फॉर्म आता है, तुम्हारा प्लेसमेंट का ग्रुप बन जाएगा अलग से. मतलब जब तुम लोग 4th ईयर पे या फिर 3rd ईयर पे आओगे तो इंटर्नशिप group बन जाएगा. So you have to fill the form, you have to give the basic details like your name, department, CV, and you have to upload your resume. After that they will like shortly your resume. वहाँ पे कुछ कुछ कंपनी शॉर्ट करता है, कुछ कुछ कंपनी सारा स्टूडेंट्स को ही अलाउ कर देता है फॉर देयर ऑनलाइन असेसमेंट. कभी कभी ऑफलाइन असेसमेंट हो जाता है. अभी तो मोस्टली कंपनीज क्योंकि चीटिंग हो रहा है बहुत, तो ऑफलाइन असेसमेंट पे शिफ्ट कर रहा है. तो असेसमेंट होने के बाद फिर से शॉर्टलिस्ट आता है, उसके बाद इंटरव्यू. अब तुम्हें पता नहीं होगा कि कंपनी किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करता है, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर. लाइक आईसीआईसीआई, अगर मेरा कंपनी का ही बात लूँ तो लास्ट ईयर पे देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड दिस ईयर पे सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है पूरा. तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद सारा राउंड्स का स्कोर मिला के भी तुम्हारा ओवरऑल स्कोर निकल सकता है, या फिर दे विल डिवाइड ईच एंड एवरी राउंड एंड लाइक उस बेसिस पे भी कर सकता है. So this is the overall procedure of like the simplest procedure of the placement. Okay, simplest explanation. इसके बाद भी कुछ कुछ चेंजेस आता है. कुछ कुछ कंपनीज ग्रुप डिस्कशन ले लेते हैं बीच में. कुछ कुछ कंपनीज ग्रुप डिस्कशन के बाद एक और राउंड लेता है, जो मोस्टली सीनियर्स मतलब एचआर राउंड्स के बाद जो होता है मोस्टली सीनियर्स के साथ होता है बहुत. लाइक पीडब्ल्यूसी में पार्टनर्स के साथ इंटरव्यू होता है, जीएस पे एचआर राउंड ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता. स्टार्टअप्स में मोस्टली सीओ से भी बात करने को हो सकता है कभी कभी, तो होता ही है. Okay, Dada. Shubham লাইক is saying that he has an experience in app development and website development. So, and he's in chemical engineering. So, what things need to be done to get his placement in software? Since you have mentioned you have experience in app development and website development, I am assuming you have good projects. So now the only thing you should do is focus on data structures and algorithms, start giving contests, and study the basic CS fundamental topics. That's it. Like you have very good projects. I'm assuming since you have experience in app development, you have done React. Yeah, start giving contests.
And Dada, apart from the picture thing, what all else extra things need to be done to make our resumes ATS friendly? See, you need to explore everything. हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारा क्लब्स होता है, जादवपुर में तो अभी बहुत सारा क्लब्स हो चुका है, तो एक्सप्लोर डिफरेंट क्लब्स, मेंबर्स बनो, वहाँ पे काम करो वहाँ पे। और इंटर्नशिप में मतलब इंटर्नशिप के पहले जितना सारा क्लब्स हो सके एक्सप्लोर कर लो। जॉइन ईसेल, ईसेल इज अ वेरी गुड लाइक ऑर्गेनाइजेशन ही बोल सकते हैं उसे। तो ईसेल ज्वाइन कर सकते हो, आई ट्रिपल ज्वाइन कर सकते हो। आई ट्रिपल में अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट है तो आई ट्रिपल ज्वाइन करो। अगर कंसल्टिंग पे इंटरेस्ट है तो ईसेल पे ज्वाइन कर सकते हो। लाइक बहुत सारे ऐसे क्लब्स है, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्लब्स भी है, लाइक मैकेनिकल पे, प्रोडक्शन पे मोटर स्पोर्ट्स क्लब है। तो एक्सप्लोर करो जितना हो सके, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। उसके बाद पजल्स, एसक्यूएल, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज देता है। लाइक इफ यू नो दिस टॉपिक्स देन you have some edge. And Anything else? Dada, in our resumes, does design or template really matter, or is content the main thing? Yeah, absolutely it matters. uh, okay, let me share my screen. I'm giving you a small example. Okay, is it visible? Yes, it's visible. So this is resume of one of my friend Arja. She's in Microsoft right now. And this is resume of my another friend. He is in ExxonMobil. Okay, now what do you think, which resume looks better? I'm not talking about the quality, like the experience and all. Which resume looks better? I think the second one does. द सेकेंड वन। बट द प्रॉब्लम है कि रिज्यूमे को ऐसे कलर मतलब कलर लगाना उतना ठीक नहीं है। प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम क्या है, जो सेकंड रिज्यूमे था वो मेरा डिपार्टमेंट का टॉपर का रिज्यूमे था। तो सिंस ही वाज टॉपर तो उसका रिज्यूमे का कलर ऐसा हो मतलब था, बट फिर भी ही वाज वेरी गुड इन द टॉपिक्स, तो उसने इंटरव्यू क्लियर कर दिया। बट द स्टैंडर्ड टेम्पलेट इज द प्रीवियस वन, दिस वन। तो रिज्यूमे में टेम्पलेट्स बहुत मैटर करता है। लाइक अगर बहुत ज्यादा कलर यूज कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि एटीएस पे स्कैन मतलब एटीएस पे बहुत लो स्कोर आ जाए, तो तब शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा कुछ। During like coding rounds or interviews, any difference is made between CSIT or other code people giving it? Absolutely, absolutely, you're gonna face that. See, I'm not demotivating you, I'm just telling you the truth. You're gonna face that. But like anything other, like but a CSIT guy should do more than a code to like make himself stand out because you know um Yeah, I didn't get your question properly. I mean, does a interviewer expect more from a CSIT guy than a code one who has like in the project section or something? Yeah, sometimes they expect more from CSIT guys, sometimes. Like it totally depends on the interviewer, but yeah, sometimes they expect more from CSIT guys. Sometimes they ask difficult topics from CSIT guys. Like they they expect these CSIT guys should know at least better. Like they should be better experience. They should have better experiences in some of the topics of computer science, which a core guy shouldn't. There's a question: what's the good ATS code for resume? That totally depends. Like if you are using any paid ATS scanner, then उस पे डिपेंड करता है। लाइक पैरामीटर्स ही तो बहुत डिफरेंट है ना। पेड यूज कर रहे हो तो तुम मतलब कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है। लाइक बहुत सारा कंपनीज मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एटीएस स्कैनर कंपनीज। ओके,
तो एक मतलब सपोज एक्स एटीएस स्कैनर कंपनी में जैसा पैरामीटर्स पे स्कोर आता है, वाई पे अलग आता है, जेड पे अलग आता है, तो सेम रेज्यूमे अलग अलग स्कोर आ जाता है तीन साइट्स पे। तो इस पे इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, द स्टैंडर्ड टेम्पलेट, एंड लाइक एवरीथिंग विल बी फाइन। Dada, there is another question. Can we join top tech companies like Google and Microsoft later after joining a consultancy company, allowing core I guys like PwC? I can give you 100 examples. Like those, like there are so many people who initially joined consulting firms or any other service-based companies, even service-based companies like TCS, Wipro, and after that, like they switched their company from TCS, Wipro, Accenture to Microsoft, Google, JP Morgan. Dada, your resume, if you're going for a master's and if you're going for a job, like, does it differ in any way? Like, if the presentation of the topics or Yeah, master's resume should be more clear, like should be in more detailed. Master's resume should be more detailed and it should be of 2 or 3 pages, even sometimes 4 or 5 pages. But if you are aiming placement, then your resume should be of 1 page only. Like it's a very strict rule that your resume should be only of 1 page, not two. ATS score बहुत लो आ जाएगा. Exceptions are there, but still ATS को लो आ जाएगा बहुत. there is a follow-up of the previous question, ki, do they face additional challenges coming from background later on? नहीं उतना नहीं आता. Can we reduce the font size to make it fit in 1 page? Yeah, you can, but it should look better. Like it should look good at least. तो फॉन्ट साइज ज्यादा छोटा करने से आई डोंट थिंक मतलब कुछ उतना फायदा होगा. तो व्हाट यू कैन डू, रिमूव ऑल अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम योर रिज्यूमे, only mention the important things like which you are comfortable with, only mention those topics in your resume. लाइक Dada, there is अगर another बहुत question. इन केस ऐसा ही हो रहा है कि बहुत ज्यादा चीज हो गया रिज्यूमे पे, तो पहले जो समरी था, समरी वाला पार्ट, खुद का एक्सपीरियंस मतलब खुद का समरी वो हटा दो. एजुकेशन में 10th 12th का बस कॉलेज मतलब स्कूल का नाम और बस क्या मतलब परसेंटेज वो मेंशन करके रख दो, ज्यादा कुछ ना लिखो उसमें. प्रोजेक्ट्स थोड़ा छोटा करके लिखो, बट 1 पेज पे होना ही चाहिए इफ यू आर सिटिंग फॉर प्लेसमेंट. There is another question, Dada. How can I build strong connections on LinkedIn and use them to find better opportunities? There is no hard and fast rule. Basically, you need to be active on LinkedIn. Like whatever you are doing, be it code DSA, be it good project, just post it on LinkedIn and make connections with lot of people, variety of people, and talk to them, ask them their experiences, ask them what did they do during their time. That will work. और सबसे ज्यादा कनेक्शंस तो मतलब कॉलेज में क्लब्स ज्वाइन करने के बाद ही होता है. तो वही बार बार बोल रहा हूँ कि जितना हो सके क्लब्स ज्वाइन करो, एटलीस्ट एक्सप्लोर करो एंड देन डिसाइड करो कि विच क्लब आई शुड ज्वाइन. There is another question. Dada, can you tell me how to find the best resumes for ECE students? Just ask your seniors, like you know which senior is in which company, just ask them for their resume and they will definitely share their resume to you. Or you can stalk them on LinkedIn. Like a lot of people, they upload their resume on LinkedIn. Also, like in the resume, your extracurricular like club activities and everything, do they provide you with an extra edge? Definitely, they provide you extra edge. Like the interviewer will ask you your experience
on that club. The interviewer might ask, a lot of time they will ask you. Basically, if you are sitting for consulting companies, then definitely they will ask you your experience in that particular club. And see, the interview हमेशा मतलब limited time का ही होता है, like 30 minutes 45 minutes इतना time का ही होता है. तो if they are asking your experience इन ए पर्टिकुलर क्लब, तो उसको एक्सप्लेन करते करते बहुत टाइम तुम मतलब कंज्यूम कर सकते हो. तो इसमें क्या होता है कि टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ नहीं पाएगा इंटरव्यूअर, तो दैट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज. Like I can give you, like I can share you my experience. Like since I was in placement, तो मेरा रिज्यूमे में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ था. तो टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ करने के बाद like they started asking me my experience in the placement. So like I started telling them my experience. So उसमें ही ऑलमोस्ट आधा घंटा प्लेसमेंट लेके ही बात किया हम लोग ने. तो that gave me added advantage. Anything else? Anybody else has any questions? I don't think there are any more questions, Sarah, but there is one. How can I improve my self-confidence and communication skills? When I get nervous, I forget the things I already know. Start giving mock interviews. Like you are from which year? Showman? First year. So right now you don't need to give any mock interview. Just join most of the clubs that exist in your company, in your college. वहाँ पे ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस सब कुछ आ जाएगा. Dada, as you are made CPC, so before this, in which clubs you connect totally? I was in Court Club, but I was not very active in that, and IEEE में भी था, but उतना एक्टिव नहीं था. मैं मोस्टली प्लेसमेंट सेल पे ही काम करता था, तो प्लेसमेंट्स में ही मोस्टली एक्टिव था. तो उतना टाइम ही नहीं मिलता था क्लब्स में ज्वाइन करने, मतलब क्लब्स में एक्टिविटी के लिए. और ऊपर से मैं मैकेनिकल से था और माय फोकस वाज इन सॉफ्टवेयर, सो वो मैनेज करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो आई डिडंट हैव मच टाइम, बट या आई एक्सप्लोर्ड मोस्ट ऑफ द क्लब्स. There is another question, Dada. What advice will you give to a third-year student who wants to go for consultancy or analytics? Like, what are the Your basic requirements? see, your communication skill should be good, and your technical, like whatever you have mentioned in your resume, you should have very good understanding of that topic. That's it. Consulting interviews are very easy. Like there are some companies, they take a little bit difficult interview like CS, but most of the companies, the interviews are very very easy. They only ask you whatever you have mentioned in your resume. So just have a very good understanding on that topics that you have mentioned, and have very good communication skills. That's it. And most of the consulting companies check your drop year. So I would suggest, like if you have drop year more than 2, then you might have some issues in consulting firms. So start preparing for course, like start having some alternatives. And if you have only 1 year of drop, then that you don't have any issue. In case of consultancy resume, which type of projects should I need to include? Excel, Power BI, data analytics, Python, machine learning, anything. Even you can add core projects as well. I am from power engineering first year. Actually, I don't know what skills to develop, how and when to do internship project. I am interested in IT placement.
I used to start learning data structures and algorithms and start preparing for your semester exams first, because since you don't know like what skills you have to develop, and what I am assuming you don't have any aim right now, like you don't have any interest right now in, like you don't know basically what software development is, what core engineering is. So first explore everything, start preparing for your semester exams, and start learning data structures and algorithms. And when you'll be in your second year, then hopefully you will get to know like what is your favorite topic, and then accordingly you can go move forward. You are interested in IT placement, but you are in first year, so first you need to explore the IT, then only you can know you are interested in IT placement. कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा बोल देता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन आईटी प्लेसमेंट, बट उतना एक्सप्लोर नहीं करता है, तो फोर्थ ईयर पे जाके ना आईटी का ना कोर का प्रिपरेशन अच्छा होता है, तो दे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. Does the subject supply matter in placements? Yeah, obviously it matters. You have to upload your semester grade cards, and बहुत सारा इंसिडेंट्स भी हुआ है ऐसा ऑफर रिवोक का ड्यू टू सप्ली. How to improve my problem solving skill? It's all about experience. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ेगा. Shoronil Shen has asked any tips for off-campus consultancy companies, how to get into there. Just reach out to your seniors who are working in the consulting companies. You have LinkedIn, uh, you are from JU, so you have so many options. You have so many seniors working in various companies. So just ask them, just reach out to them. Is PSU through GATE exam is bad or good options as job? That depends totally on the company which you are getting and the location which you are getting. Like मेरे पास बहुत सारा ऐसा भी दोस्त थे जो ओएनजीसी में रहकर भी रो रहे हैं, और बहुत सारा ऐसा भी दोस्त थे जो मतलब बहुत कम सैलरी में, बहुत मतलब एक प्राइवेट कंपनी में रह के भी मतलब वो लोग बहुत खुश है. तो PSUs आर नॉट लाइक दैट, लाइक इट्स वेरी गुड, इट्स नॉट लाइक दैट. कभी कभी पीएसयूज में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है रिगार्डिंग द लोकेशन, रिगार्डिंग द वर्क प्रेशर. Anything else? Does anyone have any question? Dada, I think that's it. Okay. Thank you, Dada, for such an interactive and interesting session. And thank you to all the participants here for being such attentive participants. Thank you so much. Yeah, it's my pleasure to attend this session. Yeah. Chalo, bye. Good night.